Hello everyone, I am Abhinandan Singh and today we are going to create another video and we are back with login controller. So previously we studied how to design a register controller. After that in this video we learn how to design a login controller in our authentication series. I think this video is the second last video. After that I think only one video will be come. After that our authentication series will be completed. And next video will be on token, and that's all. So today is the login controller. So we will log in using email and password. We know that how to register, and we pass all the required field: name, email, password, address, phone number and all that. So अगर आप इस लॉगिन कंट्रोलर की वीडियो को देखने से पहले आपको रजिस्टर कंट्रोलर का वीडियो देख लें, तभी ये समझ आएगा। एंड चलिए डिज़ाइन करते हैं लॉगिन कंट्रोलर को। इसमें भी ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे। पहले एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट को, आफ्टर दैट वैलिडेट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे ईमेल को कि यस ईमेल रजिस्टर्ड है कि नहीं। आफ्टर दैट वी चेक द पासवर्ड and we compare the password after that, and in the last we log in the user. So चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन फोल्डर को ओपन विद द VS कोड हो गया। सो देयर इज सो कंट्रोलर में हमने एक फाइल बनाया था auth कंट्रोलर। सो अगर हम auth डॉट राउट फाइल में जाएं, राउट के अंदर auth राउट में, तो हमने रजिस्टर कंट्रोलर के लिए फंक्शनलिटी को लिख दिया था रजिस्टर कंट्रोलर को। अब हमारा है लॉगिन कंट्रोलर के लिए लिखना। सो वी क्रिएट एन अनदर API फॉर लॉगिन in the if we go to server.js file, here we generate a API for register. So just like this we create another control x, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। So just like this we create another API for login. We only change the register to login, and we uncomment this line because now we need this line. सो ये राउटर हम बनाए थे लॉगिन कंट्रोलर के, तो अब लॉगिन कंट्रोलर का हम फंक्शन जनरेट कर लेते हैं auth डॉट कंट्रोलर में। सो बहुत सारे स्टेप्स जस्ट लाइक रजिस्टर कंट्रोलर। सो वी क्रिएट हियर, सो वी क्रिएट एन फंक्शन। सो एक्सपोर्ट what const login controller, and in the login controller we pass a async function with two argument, request and response. Sorry. Okay, so now we access, first we use the try catch block. Okay, in the catch we pass the console.log, and in this we pass what error while logging, and after that comma and pass the error, and also send the response dot send
and in the send we first we send the status. In the status we pass the 500 dot send. In the send method we pass the object, so we will success will be false, and message is like we can say error in login. So this is complete our catch part. Now our main part is try. So how to design try part? So for this, first we like register. First what we do? First we access the data. So just like that, we access the data. Access data. What will be data for login? We use the login as our email and password. So we use both. So for that we use the JavaScript data structure. So const and email and password. Email and password both is required, and this will be accessed by request dot body. Just like this, here we access the data. This all data is in by request dot body, and after that we are registering this all. So we access the data email and password for login. After that we validate it, and validate in the validate if email is not available, if not available password. So what we need to do, return and response dot status, and this status will be 400. After that send. In the send we pass the object, success will be false, and message we pass the email and password is required. अगर ईमेल एंड पासवर्ड कोई इसमें से कोई भी अगर अवेलेबल नहीं है और यूजर पास नहीं कर रहा है, लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, then we give an error message that is the email and password is required. After that validate, we check the email, that email is available in our database or not. So here pass check email. In this we pass and yes, we create an variable const user await, and we use the user model dot find one. In this find one we pass the email. Understand?
Just like this, we copy it, paste it, and if user is not available, we change the password to user, then success will be false, and we pass the 404 and message will be what email is not registered. Yes. सो यहाँ पे हम चेक करेंगे ईमेल को, यूज़र यूज़र मॉडल का या स्कीमा का यूज करके यूज़र मॉडल का, एंड फाइंड वन जो कि क्यूरी है हमारा मंगोडीबी में, एंड ईमेल को चेक करेंगे जो यूज़र पास करेगा कि वो हमारे डाटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। इफ़ यूज़र जो है नहीं मिलता है, देन हम एरर पॉपअप कराएंगे कि ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। सो आफ्टर दैट हमने डाटा एक्सेस कर लिया, वैलिडेट कर लिया, ईमेल को चेक कर लिया, एंड नाउ वी कंपेयर द पासवर्ड। जो यूज़र ईमेल को तो हमारा हो गया, पासवर्ड के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो यूज़र पासवर्ड पास कर रहा है वो हमारे डाटाबेस के पासवर्ड से मैच हो रहा है कि नहीं। सो फॉर दैट we just like this we use the and another variable, like here we pass the compare the password. So what we need to do, const const is match नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी यूज अवेट एंड कंपेयर पासवर्ड के लिए एक फंक्शन बनाया था जो कि था हमारा इन द हेल्पर फोल्डर और डॉट हेल्पर। सो वी कैन सी हियर कंपेयर पासवर्ड का फंक्शन बनाया था जो था एक प्लेन पासवर्ड को ले रहा था, एक हैश पासवर्ड को ले रहा था। सो वी यूज दिस फंक्शन इन आवर auth controller. So what we need to do, in await we call the compare password, like here compare password. In the compare password we pass the password, that is the our plain password, and second is the user password, means user dot password. सो पासवर्ड इज़ आवर प्लेन पासवर्ड जो कि लॉगिन के टाइम यूज़र इंसर्ट करेगा, एंड यूज़र पासवर्ड क्या है, जो हैश्ड पासवर्ड है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। लाइक हियर हम जैसे हम सर्च कर रहे हैं यूज़र के थ्रू, सो अगर यूज़र हमारा एक्सेस हो जा रहा है तो यूज़र का जो पासवर्ड होगा जो डाटाबेस में स्टोर होगा इन द हैश्ड फॉर्म जो कि हैश पासवर्ड है, वो आर्गूमेंट यहाँ पे आएगा एंड हमारे प्लेन पासवर्ड से एक कंपेयर करेगा ये फंक्शन, जो कि हम इस फंक्शन को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। कंपेयर पासवर्ड, तो कंपेयर पासवर्ड ऊपर आ चुका होगा, जस्ट देखिए इसे इंपोर्ट हो चुका है। कंपेयर पासवर्ड हैश पासवर्ड दोनों हम बताए थे, कंपेयर पासवर्ड का हम यूज करेंगे लॉगिन के टाइम एंड हैश पासवर्ड का यूज करेंगे हम रजिस्ट्रेशन के टाइम। सो यहाँ पर हम कंपेयर का यूज कर चुके हैं। अगर इज मैच है, यदि मैच है तो हम इसे लॉगिन करा देंगे, अगर मैच नहीं है देन लॉगिन नहीं कराएंगे। तो जस्ट लाइक दिस वी कैन पास हियर बट इज नॉट मैच। अगर मैच नहीं होता है देन वी व्हाट वी कैन डू is 400 and success will be false, and we can say invalid password. After this compared password, we finally log in the user. So for that, what we need to do,
So direct we send response dot status. What will be the status? 200 for successfully registration. Sorry, login. Dot send. In the send we pass an object that will be success will be true, and message user login successfully. And after that we pass the user also. So we can pass the user, create another object, and user, here we pass the name, and name हमारा कहाँ से आएगा, user dot name से, and just like that we pass the email and user dot email, and we also pass the address, and address will be user dot address. और हम फ़ोन को भी आउटपुट करा देंगे. सो फ़ोन एंड यूजर डॉट फ़ोन. So here is complete. I think yes, everything is clear. Yes, save it. So first we create a login controller function. After that access the data, validate the both data, email and password. After that we check the email is using the email. We check the user that it is available in our database or not. After that we compare the password, plain password to hash password, and in the last we log in the successfully to the user, and in the cache part we handle the cache error. So what we can do, so login controller is here. So just like register control we use the login controller. So what we can do, login controller. So हमारा login control भी आ चुका है. एंड सर्वर को भी सही है, सर्वर में तो कुछ करना नहीं है हमें. जस्ट लाइक auth route को ये पास करेगा, auth route पे जाने के बाद ये लॉगिन कंट्रोलर को पास करेगा, एंड आफ्टर दैट लॉगिन कंट्रोलर कॉल हो जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हम करेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस इंटर. Yes, server is running on port 9000. Data is connected at port 9000. So what we need to do? So now we use the postman tool. Here is our postman tool. Open it. So this is our request for registration. So first we register another user, like we pass user 4, and email will be what, test @gmail.com, and password will be 123 only, and test village, and this is right. Yes, so send it. So success is true, user is registered successfully. So हम registration कर चुके हैं. So just like we pass
एंड अनदर एपीआई वी कॉल द फॉर लॉगिन, जो अभी जस्ट हमने बनाया है, इसको कॉपी करते हैं एंड लॉगिन के लिए एक और रिक्वेस्ट यूज कर लेते हैं, लाइक वी यूज मेथड इज पोस्ट, वी कैन सी हियर method is post and we pass the API and register will be login, and in the login we go to body and raw and we pass the object email and password. So email, email, in the email what we pass, yes, in the email we pass the test, wait a second, email and password we copy it, paste it, yes. So it's done, email and password. After that we send the request to here, देखिए success is true, message is the user login successfully, and we we provide details of the user name, user for, and test gmail.com, and address is test village, phone number is 5653, and so हमारा लॉगिन का भी ये काम कर रहा है अगर हम पासवर्ड को नहीं देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी पास, देन व्हाट विल बी, देखिए ईमेल एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, जो कि हम ऑलरेडी वैलिडेशन में हैंडल किए थे, एंड अगर ईमेल हम गलत यूज कर लेते हैं या रॉन्ग ईमेल इंटर करते हैं, देन व्हाट विल बी, ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, सो ये भी हमारा काम कर रहा है। सो लॉगिन करने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन भी हो जा रहा है, एंड इन आवर डाटाबेस भी चेक, सो मंगोज डीबी कंपास ओपन कर लेंगे, कनेक्ट टेस्ट यूजर, देखिए यूजर 4 जो हम अभी जस्ट रजिस्टर किए हैं ये आ चुका है, इसको हम लॉगिन भी आसानी से कर ले रहे हैं। सो आज के लॉगिन के वीडियो में बस इतना ही था। अब इसके बाद हम एक टोकन का एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें हम एक टोकन भी जनरेट करेंगे, जैसे यूजर लॉगिन हो रहा है आफ्टर दैट एक टोकन भी आएगा जो इसी के साथ यहीं पे रिस्पॉन्स पे नीचे आएगा, ताकि हम एक मिडल वेयर भी बनाएंगे उसी कल के वीडियो में ही। सो उसमें और भी थोड़ा इन्हेंस करेंगे इस ऑथेंटिकेशन को, और भी इसकी इस टोकन के थ्रू और भी इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जो कि इन द इंडस्ट्रियल एरिया ये टोकन भी यूज किया जाता है, एंड टोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो कल का वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो लॉगिन की वीडियो में बस इतना ही था आज के दिन, कि हाउ टू लॉगिन, हाउ टू डिजाइन आवर लॉगिन कंट्रोलर। सो इन द लॉगिन कंट्रोलर अगर आपका ये देख लीजिएगा, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और लॉगिन कंट्रोलर से पहले रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर का वीडियो देख लीजिएगा कि हमारा कंट्रोलर मेन लॉजिक कंट्रोलर का ही होता है। सो रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर कंप्लीट होने के बाद ये लॉगिन कंट्रोलर आप ज़रूर देखिएगा, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी जनरेट अ टोकन। सो लॉगिन से जस्ट पहले हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे जैसे हम यूजर को लॉगिन सक्सेसफुली कर रहे हैं, जैसे सारी चीज़ें चेक हो जा रही, कंपेयर पासवर्ड, आफ्टर दैट हियर वी जनरेट द टोकन। सो आफ्टर दैट जनरेशन द टोकन, देन हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड चैनल पे अगर नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।